Points to be covered are market structure, perfect competition, and short run and long run equilibrium of firm and industry in perfect competition. So we will discuss about perfect competition market in today's lecture. Let us start today's session. First, let us see what is meant by market structure. The market can be viewed as context within which voluntary exchange among buyers and seller takes place. मतलब जहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच एक्सचेंज होता है कमोडिटी का, उस प्लेस को हम क्या कह सकते हैं? मार्केट कह सकते हैं. The most common method of classifying market is on basis of number of buyers and sellers and degree of product differentiation. नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स कितने हैं मार्केट में और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितना है, उसके बेस पे हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं. Then perfect competition is a market in which every firm is too small to affect the market price. मतलब जो भी फर्म्स है परफेक्ट कंपटीशन में वो इंडिविजुअली इतने स्मॉल रहते कि वो मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते. लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हर एक फर्म के पास थोड़ा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर. In some situations there is full control over price. In some situation there is some degree of control over price in case of imperfect competition. So let us see the classification of market. Market is classified based on the number of buyers and sellers and product differentiation as perfect competition and imperfect competition. Under imperfect competition, again we have monopoly, duopoly, oligopolistic and monopolistic and oligopoly. These are the four types under the imperfect competition. Now let us see what is meant by perfect competition. It is a market structure in which there are large number of buyers and sellers transacting a homogeneous product. इस मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी रहते हैं और सेलर्स भी रहते हैं जो होमोजेनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं. होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं, उनमें क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं होता, वो सारे सेम रहते हैं. So this is the definition of perfect competition market. Now let us see what are the features of perfect competition market. First feature is, as in definition, large number of buyers and sellers. यहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स दोनों रहते हैं. देन होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट में डील की जाती है. थर्ड फीचर इज फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म. मार्केट में कोई फर्म एंट्री कर रहा है या मार्केट से कोई एग्जिट कर रहा है तो उन्हें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो आसानी से एंटर कर सकते हैं या आसानी से एग्जिट हो सकते हैं मार्केट से. देन नो गवर्नमेंट रेगुलेशन. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं रहते. देन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज है वो परफेक्टली मोबिलिटी रहते हैं, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं. एंड लास्ट इज द परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज ऑफ डिमांड, सप्लाई, मार्केट प्राइस. जो भी बायर्स और सेलर्स है जो इस मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं उनके पास मार्केट के बारे में सारी जानकारी रहती है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नाउ इफ यू eliminate the last two features, that is perfect knowledge and perfect mobility of resources, then these first four characters represent the pure competition. And when we combine the next two features with the pure competition, it becomes the perfect competition. This is the difference between perfect competition and pure competition market. Then let us see what is the demand curve for product in perfectly competitive market. Now firm's demand curve is derived with the help of market demand and supply curve. जो भी एक फर्म मतलब एक स्मॉल यूनिट और मार्केट मतलब नंबर ऑफ फर्म्स टुगेदर मेक अ मार्केट. सो फर्म का डिमांड कर्व है वो मार्केट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के हेल्प से डिराइव किया जाता है. In perfect competition, the equilibrium of market's demand and supply determines the price. ना ये इंडस्ट्री है, ये मार्केट होल मार्केट का है, तो इसकी इक्विलिब्रियम का होता है जहां डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट होता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो भी प्राइस डिटरमाइन होता है, हमने लास्ट सेशंस में देखा था प्राइस डिटर्मिनेशन. तो प्राइस यहाँ डिटरमाइन होता है जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होता है.
सो ये प्राइस है मार्केट का प्राइस, एंड ये प्राइस ही सारे फर्म्स फॉलो करते हैं। जो भी प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम में डिटरमाइन होता है, द सेम प्राइस इज फॉलोड बाय द ऑल द फर्म्स इन द perfect competition. The point at which market demand and supply curve intersect each other is the equilibrium point, and all firms receive this price in the perfect competitive market. तो ये प्राइस यहाँ आइडेंटिफाई डिटरमाइन हुआ है, तो वही प्राइस फर्म भी फॉलो करती है। Then firms are the price taker and industry is the price maker. ना प्राइस कहाँ डिसाइड होता है, पूरा इंडस्ट्री का डिमांड और सप्लाई जब कंसिडर करते हैं वहां प्राइस डिटरमाइन होता है। तो इसलिए इंडस्ट्री या पूरे मार्केट को हम कह सकते हैं दे आर द प्राइस मेकर, लेकिन इंडिविजुअल फर्म जो है, जो भी प्राइस यहाँ डिटरमाइन हुआ है वही फॉलो करता है, इसलिए दे आर द टेकर्स, प्राइस टेकर्स। दे वोंट डिसाइड द प्राइस, वॉट एवर प्राइस इज डिटरमाइंड दे एक्सेप्ट इट, so they are called as price takers. Then the average revenue curve is the demand curve of the firm as it can sell any quantity it wants at the market price. ना ये मार्केट प्राइस है, तो फर्म परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म रहता है उससे के वो कितनी चाहे कितना भी क्वांटिटी उसे सेल करना है उस प्राइस में वो सेल कर सकता है, वो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तो इसलिए उसका डिमांड कर्व जो होता है वो पैरेलल टू एक्स हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। ये क्या होगा, डिमांड कर्व। नाउ डिमांड कर्व इज इक्वल टू AR, दैट इज एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस। देन एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट TR अपॉन क्वांटिटी। TR we have got quantity into price, and here now what, same quantity if it is same quantity it is selling, so Q and Q get cancels, it will be equal to price. So our AR will be equal to price. In case of marginal returns is nothing but change in total returns in respect to quantity. Now here total returns is just changing because of one more unit if is selling, that additional income is nothing but the price which is generated, and here price is constant, so our marginal revenue also will be equal to price. So in perfect competition, demand curve will be equal to price, will be equal to average revenue, and it will be equal to marginal revenue in case of perfect competition. Then let us see the common conditions for profit maximization. मतलब अगर एक फर्म है उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो कौन से कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटीज इट विल बी इक्वल टू 0। हम प्रॉफिट को कैसे पाई से डिनोट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, आइदर यू टेक द क्वांटिटी एज x or Q, this should be equal to 0. This is the first condition of profit maximization. By this condition we get MC is equal to MR. This condition will be satisfied. Now next here is second order derivative of cost must be greater than the second order derivative of revenue. The second order derivative मतलब हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा स्क्वायर R divided by डेल्टा x square या Q square. This is the second order derivative of revenue function. This should be less than, or this should be less than delta square C, that is cost function with respect to delta Q square. मतलब रेवेन्यू का सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो कॉस्ट से लेस होना चाहिए, या you can represent it as reverse, the cost function, that is second derivative of cost function should be greater than second derivative of revenue function. Both are means the same, just we have changed the sign and interchanged the position. So cost, this indicates that slope of MR curve is less than the slope of marginal cost curve. ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन क्या इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ
MC, and second derivative of revenue indicates slope of MR. So slope of marginal cost curve should be greater than the slope of marginal revenue curve. So these are the two conditions for profit maximization. So let us see the short run equilibrium of the competitive firm. Now in short run, there are some assumptions. First assumption is that the price of the product is given and firm can sell any quantity at that price. Short run में क्या होता है, price जो determine हुआ है market में वही प्राइस फॉलो किया जाता है और फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट दैट प्राइस. देन द साइज ऑफ प्लांट इज कांस्टेंट. जो भी एक फर्म है उसका साइज प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या है वो उस प्लांट की मतलब उस फर्म के उस प्रोडक्शन यूनिट की साइज कांस्टेंट रहेगी और फर्म फेसेस द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व. So these are the three assumptions of short run in for a competitive market. Next we will see short run equilibrium. There are two approaches. First approach is total revenue and total cost approach. इस केस में क्या, इस अप्रोच में क्या किया जाता है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व प्लॉट किए जाते हैं और प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट दैट इज पाई इज मैक्सिमम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन TR and TC, TR माइनस TC वो डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा, उस वक्त प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा. Now we have, as we have seen the total cost curve, it is the inverse S shape. So this is the total cost curve, and then we have total revenue. In case of perfect competition, total revenue will be the straight line passing from origin from left to right, because here there is constant increase in the revenue. प्राइस सेम रहने की वजह से अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है तो यहाँ ये कांस्टेंट इंक्रीज रहेगा, इसलिए टोटल रेवेन्यू के लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड. सो प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन देयर इज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन TR. नाउ हियर एट दिस पॉइंट देयर इज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द TR एंड TC, दैट इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. So this is the Q is the equilibrium quantity. The next approach is the marginal curves approach. Marginal curve approach जो हमने पहले दो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन देखे थे उसे फॉलो करते हैं. फर्स्ट कंडीशन व्हाट इट वाज, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड सेकेंड स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द slope of marginal revenue. Now you can see here in the graph we have plotted marginal revenue and marginal cost. Now marginal cost is cutting the marginal revenue at 2 points, Q1 and Q2, but both the points are not the equilibrium points. We have to check the second condition to identify which is the equilibrium position. Now second condition, what is slope of marginal cost should be greater than slope of marginal revenue. Now in case of first point here Q1, the slope of marginal cost, it is negative because here marginal cost is declining, so slope will be negative, and the slope for marginal revenue here it is equal to 0 because it is a straight line parallel to x-axis, then slope will be equal to 0. So in this case first point negative slope, this is less than the 0. So at this point second condition is not satisfied because slope of marginal cost is less than the marginal revenue. We want slope of MC should be greater than MR. So let us see at the second point, and second point first condition is satisfied, MR is equal to MC. Then slope of MC in case of second point it is positive because here the cost is marginal cost is increasing. So when a particular curve is increasing upwards, then the slope will be the positive, and for MR it is, as it is the parallel line, it is slope is 0. So positive value will be always greater than 0. So here the second condition is fulfilled, that is slope of marginal cost is greater than the slope of marginal revenue. So at this point the firm will be in the equilibrium at quantity Q2. So in second condition also we can, in easy language we can say MC curve
should cut the MR curve from below. Now here you can see MC curve, it is cutting the MR curve from below. So this is the profit maximization point in case of short run equilibrium. Then output decisions in short run based on the equilibrium. Now what is the output that is sold by the firm? Now the level to get the maximum profit. Now the level of excess profit or loss depends on the level of ATC, that is average total cost at the equilibrium position. Now we have identified the equilibrium position at MR is equal to MC and slope of MC should be greater than slope of MR. So at this point we have identified the equilibrium position. Now we have to see the output which is sold at this point, whether it is giving profit to the firm or it is giving loss. So in this graph you can see here our equilibrium position is here. Now at this point let us say Q1 quantity is sold. MR is equal to MC over here. Now depending on the position of ATC at the equilibrium. Now at ATC, that is average total cost at the point of equilibrium, it is below the price line. Cost is below the price line. So the firm will earn profit in case of this. Now this example, and the profit is equal to this shaded area. This will be the profit earned by the firm in this case, when average total cost is below the price line at the point of equilibrium. Then there are three possibilities in short run, that is firm can earn either normal profit, supernormal profit, or it can bear the loss. Normal profit means the point at which price is equal to average total cost. At this point firm earns the normal profit. Supernormal profit means price is greater than the average total cost, and loss means price is less than the average total cost. So you can see here normal profit is earned when average cost is equal to average revenue. Average revenue is nothing but equal to price. Then if average cost is greater than average revenue, then it is equal to loss, and if average cost is less than average revenue, then it is supernormal profit. So let us see graphically the each case. First case of normal profit. Now in case of normal profit, the point of equilibrium is here. Marginal revenue is equal, this is the marginal revenue and this is the marginal cost. This is the equilibrium. Now at the point of equilibrium, ATC, that is average total cost, is equal to marginal cost is equal to the average revenue. So average cost is average total cost, or we can denote it as average cost is equal to average revenue. So this is the case of normal profit. So this is the graphical representation of normal profit. Next is the loss. Now let us see now equilibrium point. It is MR is equal to MC. Here is the equilibrium point. So if we take the quantity here, this is the quantity Q1. So at the equilibrium point, our average cost is above the price line, which indicates that average revenue is less than the average total cost. So this is the condition of loss. जो भी revenue है वो क्या है, लॉस कॉस्ट से कम है, इसका मतलब कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा हुआ है रेवेन्यू से, तो वो क्या वो कंडीशन लॉस है, वो फर्म लॉस इनकर करते, और लॉस इज इक्वल टू दिस शेडेड एरिया. This area will be the loss incurred by a firm at the equilibrium quantity. Next, supernormal profits. Supernormal profits. Now, equilibrium position क्या है? MR is equal to MC. This is the equilibrium position. At equilibrium position, now ATC, it is ATC
is or price is greater than ATC or ATC is less than the price. Price is nothing but AR. So AR is greater than the average cost. So this will be the case of supernormal profit. And this shaded area indicates the supernormal profit earned by the firm. You can see at equilibrium point here, cost curve is below the price curve. So this is the profit earned by the firm. This is the supernormal profit. Then shutdown point. In perfect competition, if market price that firm faces is above the average variable cost curve but below the average cost, then firm should continue to produce in short run. But if this condition continues, they have to exit in the long run. The point where marginal cost curve crosses the average variable cost curve is the shutdown point in this case. ना अगर क्या होगा, प्राइस लाइन ये now average cost is greater than the average revenue, but average variable cost is equal to average revenue. It just covers the, ना इस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट है वो रेवेन्यू से ज्यादा होगा, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट will be equal to average revenue. This indicates that firm is able to meet his variable cost but not the fixed cost. In such cases, this is the point called as shutdown point. If the price falls below this, then the firm incurs the heavy loss and it has to exit from the industry. So this point is called as shutdown point. Point at which average cost is greater than the price, but it is equal to average variable cost. So, and this is the loss incurred by the firm. If the market price in perfect competitive firm faces below average variable cost at the profit maximizing quantity, then the firm should shut down the operations immediately. यहाँ ग्राफ में हम दे सकते हैं. Now this is the price or MR curve. Now this is the equilibrium point, and at the equilibrium point, both equilibrium price is less than the एवरेज कॉस्ट. यहाँ कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हेवी लॉस होता है. बोथ एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो ग्रेटर एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन द प्राइस. सो दिस इज द लॉस, and at such conditions firm should immediately shut down the operation to avoid the further loss. Next we will derive the supply curve of the firm in the perfect competitive market. Now supply curve मतलब क्या होता है? Supply curve, it shows the relationship between the price and quantity. At different price, what is the quantity offered for sale? Now for the supply curve of firm is derived by points of intersection of marginal cost curve with successive marginal revenues curve. Now ये कॉस्ट कंसेप्ट है परफेक्ट कंपटीशन फर्म के. तो हम सप्लाई कर्व डिराइव करने के लिए क्या करते हैं? नाउ मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, तो हम, एंड दिस इज द प्राइस आइडेंटिफाइड, दिस इज द फर्स्ट प्राइस आइडेंटिफाइड, दैट इज P1. It is determined in the market. So this is Q1 will be the quantity offered for sale at price P1. ना अगर प्राइस बढ़ गया परफेक्ट कंपटीशन में, तो हमारा क्या हो गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू है. प्राइस इज नथिंग बट मार्जिनल रेवेन्यू, एंड दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट. मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. सो क्वांटिटी सप्लाइड विल बी Q2. Likewise, if price increase to next level P3, then quantity will be Q3. So if we take the combination of these goods, that is quantity and the price, then this will give the supply curve. Supply curve of perfect competition market indicates the positive slope of the marginal cost curve, upward rising part of marginal cost curve. This the downward sloping curve will not indicate the supply curve, because यहाँ क्या होता है, as the here it is showing the negative side, marginal cost is decreasing over here,
it is not showing the proper supply. यहाँ नेगेटिव है marginal cost, हमारा marginal cost का slope. This is not showing the supply of the curve. Just the positive part of marginal cost will show, indicate the supply curve of the firm. So this is the supply curve derived from the positive part of the marginal cost curve. Then long run equilibrium of the firm. The long run is a period of time in which firm can change its plans and scale of operation. मतलब लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है, जहां पे एक फर्म उसका प्रोडक्शन प्लान चेंज कर सकता है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं और ऑपरेशन लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल में चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम लॉन्ग रन कहते हैं. दस लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल एंड देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट. ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल इन long run. The firm in long run equilibrium under perfect competition when it does not want to change its equilibrium output. When we can say firm is in equilibrium in long run, when it does not want to change the equilibrium output, it is earning the normal profit. All the firms in long run in perfect competition earns the normal profit. If some firms are earning supernormal profits in long run, then what will happen? Seeing the supernormal profits, new firms will enter the industry, and again the quantity supplied will increase. So again, whatever supernormal profits will be there, it will be absorbed by the new coming firms. And if some firms are incurring loss, seeing the incurred loss, some firms they will leave the industry until the remaining firms earns the normal profit. So all the firms in long run in perfect competition will earn the normal profits. In long run, firms are in equilibrium when they have adjusted their plan so as to produce at minimum point of their long run average cost, which is tangent to the demand curve defined by the market price. Long run जब long run equilibrium कब होते हैं firms, जब उनका प्लांट साइज या प्रोडक्शन क्वांटिटी एडजस्ट की जाती है टू द मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट तक की क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, एंड एट दैट पॉइंट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी द टेंजेंट टू द डिमांड कर्व. सो लेट अस सी इन द ग्राफ. Each firm of the industry will be in long run equilibrium when it fulfills the two conditions. First condition is, in equilibrium, short run marginal cost must be equal to long run marginal cost, as well as short run average cost should be equal to long run average cost, and both must be equal to marginal revenue equal to average revenue equal to price. मतलब यहाँ इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, at this point short run marginal cost is equal to long run marginal cost, and short run average cost equal to long run average cost, which is equal to average revenue and equal to marginal revenue. So first condition we can write it as short run SMC, that is short run marginal cost equal to long run marginal cost, which is equal to marginal revenue equal to average revenue is equal to price, and this is equal to short run average cost, which is equal to long run average cost, and this occur at the minimum point of long run average cost. This is the long run average cost at the point of its minimum. This condition is fulfilled, and the long run marginal cost curves the cuts the marginal revenue curve from below. Now long run marginal cost, ये long run marginal cost है और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है. सो द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शुड कट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. सो वेयर दीज ऑल कॉस्ट विल बिकम इक्वल, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर इन लॉन्ग रन फॉर अ firm in perfect competition. Then long run equilibrium of the industry. A industry is in equilibrium when all firms earn the नॉर्मल प्रॉफिट. जितने भी फर्म्स है इंडस्ट्री में, जब वो सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगे तो इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम में होगी. देयर इज नो इंसेंटिव फॉर फर्म्स टू लीव द इंडस्ट्री और फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर इट. यहाँ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, इसी वजह से किसी को भी बाहर से वो न्यू फर्म्स अट्रैक्ट नहीं होते इंडस्ट्री में, ना ही
जो इंडस्ट्री में है वो बाहर जाने की इच्छा रहती है उन्हें, क्योंकि उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहा है. Then with all factors homogeneous and given their price and same technology, each firm and industry and whole are in full equilibrium where long run marginal cost equal to marginal revenue equal to average revenue will be equal to price, which will be equal to long run average cost curve at its minimum. The firm इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब सारे फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंडीशन क्या है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू long run average cost at its minimum. You can see here at this point the firm is in equilibrium where all its costs are equal and equal to AR equal to MR. Such equilibrium position is attained when long run price of industry is determined by equality of total demand and supply of the industry. ये कंडीशन कब फुलफिल होती है? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल रहते हैं इंडस्ट्री में. दैट इज द पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स फॉर एन इंडस्ट्री. दिस इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री. So there are some other kinds of imperfect competition. Now we have discussed perfect competition. In imperfect competition, other than monopoly, duopoly, oligopoly, and monopolistic, we have three other types of market structure. One is monopsony. It is the market condition where only one buyer exists. Example: sugar factory in particular growing area, tobacco board, coffee board. मतलब यहाँ नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, सेलर्स लार्ज नंबर, बट बायर इज ओनली वन. So this is the opposite case of monopoly. Monopoly में क्या हो जाएगा? Single seller, large number of buyers. But in monopsony, one buyer, large number of sellers. Example: sugar factory in particular growing area. Then oligopsony. It is a market where few buyers exist. Example: buyer of gas and iron ore from government. यहाँ few buyers exist होते हैं. And bilateral monopoly मतलब it is the market condition in which there is single seller and single buyer for a commodity. Example: army vehicles are manufactured in India by Hinduja Group and army is the sole buyer. So here seller भी एक है और buyer भी एक है. तो इस केस को हम कह सकते हैं bilateral monopoly. Remember, when we end with poly, we used poly, then it indicates the number of sellers. Sellers का number indicate करता है. And when we consider sony, then that is the number of buyers in the market. Now, for example, monopoly, it is the single seller, and monopsony, it is the single buyer in the market.